Hello everyone, welcome to the N3 Academy. Please comment about the audio visual so we can start the session. Yes, we are starting the INI-CET injection. Yes, INI-CET injection. And these are the high yield session based on the previous year topics of the INI-CET. Yes. So in this session, yes, so first topic is we are taking on the INICET 2020 previous year November topics: gastric glands, leukemia, lymphoma, and the comparison tables. Yes. So if you have any doubt, you can ask in the chat box. Yes, so cheap cell secrete the enzyme, and this is pepsinogen. So why cheap cell? Cheap means chief. So cheap means man. So this act as a main work, means the important work is the enzyme secretion. So cheap cell secrete the enzyme which is pepsinogen, and it has abundant ribosomal RNA. And this cheap cell, before the C alphabet we got the B alphabet. For B you can remember basophilic, before you can remember basal part. So these cheap cells situated on the basal part, these cheap cell are basophilic. Just remember to be basophilic and the basal part, and the enzyme secretion pepsinogen and present on the fundus. Yes, chief F4 you can remember fundus. Now next cell is parietal cell, or you can say oxantic cell. Yes, parietal P4 you can remember pink. So this is pink color means this is eosinophilic. Eosinophilic. Yes, pink means this is eosinophilic. And P means प्यार means love, so you can say it secretes the lipase. Parietal cell क्या secrete करती है यहाँ पे? Lipase. Yes sir. So parietal cell में P4 the pink color होता है, E4 eosinophilic होती है, I4 intrinsic factor secrete करती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है. इंट्रिंसिक फैक्टर आगे जाके B12 का अब्जॉर्प्शन कराता है. यस, पी से याद कर सकते हो पका हुआ एग मीन्स फ्राइड एग, अपेरेंस इनकी मिलती है. और पी को आप क्या बना सकते हो? एफ. तो ये फंडस में मिलती है. सो पैराइटल सेल में आपने क्या सीखा? P4 पिंक है, इओसिनोफिलिक है. यस, लाइपेज सिक्रेट करते हैं. और इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर, HCl और फ्राइडे का अपीयरेंस यहाँ पे मिलती है. तो यही क्वेश्चन पूछा गया था पहले INI-CET में. फ्राइडे का अपीयरेंस का फोटो दिया था, कहाँ होती है ये? सुपरआइटल सेल में होती है. नाउ तो एंटेरोक्रोमाफिन सेल ई के बाद अल्फाबेट में क्या आता है? EFGH H4 यू कैन से हिस्टामिन. So this enterochromaffin cell secrete the histamine. Yes. Now, so next is G cell. As the name suggests, G4 you can say gastrin, and gastrin as A for antrum. So this a G cell present on the antrum. Yes. So we remember G cell. G cell gastrin. G cell secrete the gastrin. Gastrin as the second alphabet ANN, and AN means antrum. So where this present on the antrum. Yes. So now phases of the gastric secretion. Yes, phases of the gastric secretion. So there are three phases: cephalic, gastric, and intestinal. Cephalic C is the third alphabet, so you can say third. Zero means 30% is gastric. This G look like six, so 60%. Intestinal is I, so I के आगे zero लगा सकते हो, so 10%. Yes. तो फेजेस ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रेशन को देखें. सेफेलिक में 30% होता है, गैस्ट्रिक में 60% होता है, इंटेस्टाइनल में 10% होता है. तो आपसे पूछे सबसे ज्यादा किस फेज में होता है, तो गैस्ट्रिक फेज में होता है. ये सेफेलिक सी मीन्स ओनली सी. सो ओनली सीइंग द फूड you got the gastric secretion. So this is cephalic food, cephalic phase. केवल चीजों को देखने से ही यदि सिक्रेशन बढ़ रहे हैं तो वह है cephalic. यस, तो आगे बढ़े. वैसे पूछ सकते हैं सबसे ज्यादा कौन सी होती है, तो गैस्ट्रिक होती है, फिर सेफेलिक होती है, फिर इंटेस्टाइनल होती है. तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं. यस, तो अनकंडीशनल किस में हो रहा है? सेफेलिक में हो रहा है. नाउ आगे चलते हैं अपन अपने मेन टॉपिक पर. सो यहाँ पे अपना मेन जो चैप्टर है उस पर आ जाते हैं. मेंटल सेल लिम्फोमा. यस, सो यहाँ पे जो स्टोरी है वो है मेंटल सेल लिम्फोमा की. And you can imagine this mental person. For mantle cell lymphoma you can imagine this mnemonic story as a mental person. Yes, this mental person, and you can predict the every point. So you can say this mental person because this is mental, so prognosis is very poor. So this mantle cell lymphoma, poor prognosis, survival only 3 to 4 year. Yes. Now you can see there is a polyp-like growth in the picture in the mental person. So you can say polyp-like growth means lymphomatoid polyposis. So in the intestine there is a polyp-like growth. क्या कहोगे इसको? Lymphomatoid polyposis. Now
तो 2 or 3 people डू नॉट मेंटल, और यू कैन से 23 साल की उम्र में कोई भी मेंटल नहीं होता है. सो दिस इज CD23 नेगेटिव, बट CLL इन द SLL CD23 पॉजिटिव. सो you can differentiate between mantle cell lymphoma and SLL or CLL. So at the age of the 23 year, you are not a mantle, so CD23 negative in the mantle cell carcinoma, but positive in CLL or SLL. Yes. As you see in this picture, this mental person is a male, and this look like the fifth to sixth decade. So this is common in the male, this is common in the fifth to sixth decade. And you can say this side is a lymph node, so panelless generalized lymphadenopathy is there. And you can see these are 5 fingers. So 5 fingers means you can relate CD5 is positive. And you can see this cycle. So what this cycle denote? This cycle denote a cyclin D1 overexpression. Cyclin D1 overexpression in the 90% of the patients. So cyclin D1 को ही क्या बोलते हैं? BCL1, and you can easily appreciate the 1 and 1 shape in this. So translocation 11 is to 14. So which translocation is seen in mantle cell lymphoma is 11 is to 14. Are we going to remember this one? This one is 1, so 11 is to 14. और when you write the m, this m is 11. yes, m लिखते हो तो यहाँ पे भी 11 बनता है, so 11 is to 14 इसका ट्रांसलोकेशन हो जाएगा. And you can see this person is wearing the socks. You can see this person is wearing the socks. So socks means socks 11. Socks 11 is the best marker. Yes. So even in the cyclin D1 negative patient, because cyclin D1 is only present in 90% of the patient, but 10% of the patient in mantle cell lymphoma उसमें ये नहीं होता है. So उसमें best marker क्या हो जाएगा? socks 11. Now, so centroblast is absent. So nothing is the blast in the cycle. So centroblast is absent. Now mental means pagal. Pagal means pa. Pa means PAX5 positive. And you can say CD45, CD20, FMC7 also positive. Surface IgM and IgD also positive. Yes. So this thing is clear. Now, so next is this another name is small cleaved cell with differentiated effacement of the lymph node. So biopsy में क्या मिलेगा आपको? बोन मेरो में small cleaved cell with diffuse effacement of the lymph node. So कैसे याद करोगे mental cell lymphoma को? एक mental person की स्टोरी को अज्यूम करोगे कि ये मेल है, फिफ्थ टू सिक्स डिकेड का है, यहाँ पे आपको पोलीप्लाई का ग्रोथ मिल रही है, तो लिम्फोमेटोइड पोलीपोसिस आपने बोल लिया. इसकी एज 23 ईयर नहीं है, 23 ईयर नेगेटिव है. पेनलेस जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी इसको है, साइकिल चला रहा है, साइक्लिन D1 है, इसका ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है, इसको BCL1 बोलते हैं, साइकिल CL बोल सकते हो. 11:14 इसका ट्रांसलोकेशन है, और इसमें क्या है? सेंट्रल में कोई ब्लास्ट नहीं हो रहा, सेंट्रो ब्लास्ट यहाँ पे एब्सेंट है. और क्या यहाँ पे बोलोगे? नायु मेंटल जेन होता है, उससे ये बनता है, और मेंटल ये ज़्यादा प्रोग्नोसिस का नहीं होता है, पुअर प्रोग्नोसिस इसका है. यस. और मेंटल पागल है तो PAX5 इसमें पॉजिटिव मिलता है, बाकी CD43, CD20 और FMC7. तो केवल इसकी स्टोरी से अपन ने मेंटल सेल लिम्फोमा का सब कुछ यहाँ पे देखा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंटल सेल लिम्फोमा. यस, आगे बढ़े. नाउ सो अब अपन देखेंगे कंपैरिजन टेबल बिटवीन वेरियस ब्लड कैंसर्स, ल्यूकेमिया. सो follicular lymphoma. So follicular, so you can say two people can be friend. So two people can be friend. So this present with the BCL2. Yes, and centroblast is positive because fall means something blast okay, fall हो गया. So centroblast is positive. Yes. And CD10 is positive. So we can say this CD10 is positive when you write the follicular OL. इसको अपोजिट करेंगे तो क्या बनेगा? 10. Yes, so CD10 is positive. Yes, so CD10 का दूसरा नाम क्या होता है? CALLA. Now, so this follicular you can say F4. So F4 5, O4 out. So CD5 is negative. Yes, so क्या अपन ने देखा follicular में? How we can remember this follicular? Follicular means you can say fall. कैसे फॉल हो गया? कि सेंट्रल में ब्लास्ट हो गया तो कोई गिर गया. सो सेंट्रोब्लास्ट इज पॉजिटिव. यस. एंड यू कैन से यहाँ पे इजिली यू कैन डिराइव द 0 and 1. सो दिस इज 1 0. CD10 पॉजिटिव, CALLA इसको बोलते हैं. F आउट मीन्स 5 आउट, 5 नंबर को आउट कर दिया मीन्स 5 क्या है? नेगेटिव. CD5 इज नेगेटिव. एंड टू पीपल कैन बी फ्रेंड. सो BCL2. यस. नाउ नेक्स्ट इज मेंटल सेल लिम्फोमा. तो मेंटल सेल को तो काफ़ी डिटेल में देखा है. साइकिल में कोई ब्लास्ट नहीं होता है, 23 साल का कोई मेंटल नहीं होता है, 5 उसकी अंगुलियां थी, साइकिल वो चला रहा था, तो साइक्लिन D1 हो गया, और 11:14 हो गया. साइकिल में आपने देखा था, और M लिखते हो तो ऐसे 11 के डंडे यहाँ पे खींचते हो, तो ये भी क्लियर है. आगे चलते हैं अपन. द नेक्स्ट इज SLL और द CLL. यस.
SLL of the CLL. So SLL CLL means C means चीज, कुछ चीज लेने जा रहे हैं, यस कुछ चीज लेने जा रहे हैं। तो चीज लेने जा रहे हैं तो कोई बोलेगा तेरा क्या जा रहा है, मैं ये चीज लेने जा रहा हूँ, तो तेरा क्या जा रहा है मीन्स तेरा Q. So in the SLL and the CLL the deletion of the 13q, and this is only leukemia which is not associated with the radiation exposure. C for CLL, C for you can remember Coombe positive. Yes, and this is naive B cell and Rye and Binet staging is used, and there is a smudge cell, basket cell, and parachute cell is present. And when it become to DLB cell, we called as a Richard syndrome, and more than 30% of the lymphocyte from the bone marrow aspirate. Yes, so we will see the mnemonic story for this. So CLL means you are going to समथिंग चीज, कुछ चीज लेने जा रहे हो आप, तो क्या चीज लेने जा रहे हो यहाँ पे देखो, दिस इज अ रिच पर्सन, पैसे वाले होंगे तभी तो कोई चीज लेने जा रहे हो, रिच पर्सन. सो रिचर्ड सिंड्रोम व्हेन दिस CLL or SLL present to DLBCL, and this person is bright, so not associated with the radiation exposure. And you can see this picture, this is basket, so basket cell, comb, so comb cell, yes, and parachute, so parachute cell, yes, and this is पैसे यहाँ पे देख रहे हैं तो रिचर्ड सिंड्रोम, yes. तो CLL और SLL की ये स्टोरी है, फोटो से याद कर सकते हो, यहाँ पे रेडिएशन से एक्सपोजर नहीं है, बास्केट है, पैराशूट है, कोम्ब है, पैसे हैं, रिचनेस है, यस. तो ये सब कुछ है यहाँ पे. और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि CD23 मेंटल में नहीं था, बट यहाँ पे वो पॉजिटिव मिल जाता है. एंड मोर देन 30% ऑफ द लिम्फोसाइट बोन मेरो एस्पिरेट में आपको मिलती है, यस. नाउ सो नेक्स्ट चलते हैं अपन DLBCL में. इन DLBCL, BCL6, देन BCL2 एंड MYC, ये तीनों यहाँ पे पॉजिटिव मिलते हैं. BCL6 ज़्यादा मिलता है, फिर 2 होता है, फिर MYC होता है, यस. नाउ सो ये जो पर्सन है इसका नाम है रायन बिन्नेट. सो रायन बिन्नेट जो स्टडिंग होती है वो CLL या SLL के लिए होती है. नाउ नेक्स्ट इज मार्जिनल जोन लिम्फोमा. मार्जिनल मीन्स मार मीन्स डेथ, दोनों को खत्म कर दिया, सो बोथ आर नेगेटिव. यस, माल्टोमा इज एसोसिएटेड. नाउ बर्किट, so Burkitt is associated B second alphabet, so BCL2 and Burkitt, so you can say this is BCL6 positive. Yes, now please wait, sorry, this is BCL6 positive. Now, so what is the translocation in the marginal is 11:18. Yes, so marginal means marriage, so girls marriage age क्या है 18, यू कैन रिमेंबर. नाउ बर्किट, सो बर्किट में क्या बोलोगे, बर्किट में जो बी है वो 8 जैसा दिखता है, सो 8:14. देन यहाँ पे कर सकते हो, यस. तो यहाँ पे देखो लिख रखा है 8:14, देन 8 को यहाँ ले जाओ, 2:8, देन 8 को यहाँ ले जाओ, 8:22. इस तरह का ट्रांसलोकेशन यहाँ पे मिलता है. स्टारी स्काई अपीयरेंस यहाँ पे मिलती है, स्टारी स्काई अपीयरेंस यहाँ पे मिलती है. So this is a comparison between follicular mantle cell lymphomas, SLL, DLBCL, marginal, and the Burkitt. Now, so next is lymphadenopathy is not seen in CML, and hairy cell leukemia. Splenomegaly is not seen in aplastic anemia and G6PD deficiency. So this negative point is also important. Now, so next Burkitt lymphoma type. Burkitt is African type and sporadic. African you can remember by E. E for Epstein Barr virus is associated. E for endemic. E for बच्चों में, और E को उल्टा कर दो तो क्या बनेगा, मेंडिवल में मिलता है. स्पोरोडिक इज सीन, स्पोरोडिक इन्वॉल्व पेरिटोनियम. तो स्पोरोडिक टाइप का बर्किट किसको इन्वॉल्व करता है, पेरिटोनियम को. यस, आगे चलते हैं द नेक्स्ट स्टोरी. यस, तो क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये डिस्कस दिस. Yes, so this photo is related to which tumor? Yes, type in the comment box. Yes, if you attended our earlier session, you can answer in the chat box. Can anybody guess which brain tumor is associated with this condition? Yes, so this is CML. You can say कमल का फूल यहाँ पे दिख रहा है, so this is क्या हो जाएगा यहाँ पे CML. CML. Yes. तो कैसे अपन यहाँ पे देखेंगे the story of the CML. So you can say in the CML. Yes. So 2L is low in CML means yes, 2L is related to this. Lymphadenopathy is not present. Now, so this is the story of the CML,
and this is a nature scene. You can correlate this nature scene. So this nature scene has a massive spine, so massive splenomegaly is there, and there is a no loin in this nature scene. So M3 academy classes sufficient है INI-CET के लिए. Yes. तो यहाँ पे अपन देखते हैं the loin. So there is a no loin in this scene. So you can say lymphadenopathy is not present, and there is a sun. There is a sunrise. So this is afternoon. Afternoon means you can say 12 o'clock. So 12 o'clock means B12 is increased. B12 is increased in CML. Then you can see this girl, and this girl is look like the garden party. Yes, garden party or college girl appearance is there. Yes, and these girl are saying, I am a college girl. I am a college girl means imatinib. Imatinib is a drug of choice. Imatinib is a drug of choice for CML. And you can see a cow. Cow को हिंदी में क्या 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 कहते हैं? गाय. तो यहाँ पे किसी गाय है सफेद गाय. So there is a white cow means सफेद cow means pseudo गाय means pseudo gaucher. तो pseudo gaucher cell कहाँ पे मिलती है? Pseudo gaucher cell, or you can say C blue histocyte is present in this. Yes, and buffalo also present. So basophilia, eosinophilia is also present this. And you can see there is a water, and in this water there is a fish. You can see in the water a water in this fish. So what is the investigation of the choice for the CML is fish. Yes, fluorescent in situ hybridization, and this is कमल का फूल. So CML की बात कर रहे हैं, and this place is located on the Philadelphia. So chromosome is Philadelphia, ABL BCR 9:22 and 210 kilodalton. How we can remember? 2, the next lower number is 1, next lower number is 0. So 210 is kilodalton. 210 kilodalton इसका ये होता है. यस, so यहाँ पे क्या देखा, सारी चीजें आप बता सकते हो. CML की स्टार दिख रहे हैं ऊपर, तो स्टार से एक्सटर्नल टेंडरनेस आपको याद आएगा. इस जंगल में कोई लोयन नहीं है, लोयन में एलन आता है. लिम्फेडेनोपैथी यहाँ पे नहीं मिलेगी. 12 बज रही है तो B12 यहाँ पे बढ़ा हुआ मिलेगा. काफी बड़े स्पाइन है, मेसिव स्पाइन MS मैसिव स्प्लेनोमेगली आपको मिलेगी. सफेद गाय है, शूडो काउ गाउचर सेल मिलेगी. बफेलो बेसोफिलिक इओसिनोफिलिया मिलेगा. गार्डन पार्टी और कॉलेज गर्ल अपेयरेंस मिलेगी. आई एम गर्ल तो इमाटिनिब ऐसे वो बोल रही है. और CML यहाँ पे मिल रहा है. इस पानी में फिश है, तो फिशेस का इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस है. इस जगह का नाम फिलाडेल्फिया है, और यहाँ पे 210 किलो डाल्टन इसका वेट है. यस, ABR एंड BCL 9:22. ये चीज क्लियर हुई. आगे बढ़े नाउ. So next is the phases of the this. यस, CML. So CML की phases क्या है? यहाँ पे केब. क्या क्या फेजेस होती है इसकी? केब. सो केब इज क्रोनिक एक्सेलरेटेड एंड ब्लास्ट. क्रोनिक एक्सेलरेटेड एंड ब्लास्ट. सो क्रोनिक फेज blast more than 10%, accelerated 10 to 20%, and blast more than 20%. So this blast cell resemble this blast phases of the AML resemble as this blast phases of the CML resemble as a AML. So ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, CML की कौन सी फेज AML को असेंबल करती है? तो वो होती है प्लास. यस, एक्सेलरेटेड में क्या मिलता है? बेसोफिलिया मोर देन 20%. हाउ वी कैन रिमेंबर? ए के बाद क्या आता है? बी. सो बेसोफिलिया मोर देन 20%. यस. So now, so next type of the CML is juvenile. Yes, juvenile क्या होता है? Juvenile is जानलेवा. So जानलेवा, so poor prognosis is juvenile means low age group fetal. So HbF is more normal. LFP. Yes, some skin rash in children. Yes, and there is a no Philadelphia chromosome. So we cannot send any juvenile to this scene. So यहाँ पे क्या होगा? ऊपर के जैसे जंगल का रास्ता अपन ने बताया, वहाँ किसी जुवेनाइल को अपन नहीं भेजेंगे. जुवेनाइल को नहीं भेजेंगे. वो जगह का नाम क्या था? जगह का नाम था फिलाडेल्फिया. सो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज नॉट प्रेजेंट. यस, so you can remember this. Shall we proceed? So these things we already discussed about this translocation in the lymphoid neoplasm. तो mental cell lymphoma M को ऐसे टुकड़ा कर सकते हैं, तो 11:14 बनेगा. follicular F4 you can remember 14, so 14:18. DLBCL 14:18. Burkitt B is look like 8, so 8 you can remember. Maltoma, this M you can break down. This M is look like 11, so Maltoma. And Mary's age is 18. मार्जिनल मेरीज एज इज 18, एंड एम को ऐसे टुकड़ा करके 11 बना सकते हैं. CLL is 14:19. CML leukemia we already discussed 9:22. Acute myeloid leukemia AML, this depend on the time type. कौन सा टाइप है? 8 से 21 है, 15 से 17 है. यस, AML 2 है या 3 है, उस पर ये चीज़ें डिपेंड करने वाली है. प्रीकर्सर 9:22 and 4:11. Yes. Now Ewing sarcoma, Ewing E4 you can remember 11.
11 का जस्ट डबल कितना होता है 22, सो 11:22. प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा इज 721 and 1721. दिस इज easy 721 and just make this one in front of the 17, so 17 and 21. Now CD30, this is in the anaplastic large cell lymphoma ALCL, so this is a large number, you can remember translocation 225. yes 3 के पहले क्या आता है 2, इन दोनों को जोड़ोगे क्या होगा 5. नाउ लिम्फोप्लाज्मोसाइटोइड लिम्फोमा 9:14. साइनोवियल सार्कोमा, दिस ऑलरेडी आस्क्ड. साइनोवियल, साइना की एज 18. मिक्सोइड सार्कोमा 12:16. alveolar soft part sarcoma X17. yes so this is all about the common translocations. Yes, shall we proceed to the next? Now AML classification. So next देखते हैं M0. So 0 means minimum. So minimal differentiation. M1, 1 को क्या कर सकते हैं? 1 is like minus, so without differentiation. Now M2. So two people come together. So when two people come together, they behave like mature. So with maturation. So this is most common type of the AML, and this is associated with the at 221 because यहाँ पे कर सकते हो 2 का जो क्यूब होता है वो कितना आता है यहाँ पे 8. यस मैक्सिमम चांसेस ऑफ द क्लोरोमा इज प्रेजेंट. सो मैक्सिमम कलर्स कब आएंगे? जब दो लोग साथ में होंगे तभी कलर्स आएंगे यहाँ पे. प्रोग्नोसिस इसका अच्छा है. यस तो यहाँ पे क्या देखोगे, जब दो लोग साथ में आएंगे तो मेच्योरिटी दिखाएंगे और ये सीन काफ़ी ज़्यादा मिलता है उनकी लाइफ में. यहाँ पे कलर दिखेगा और उनका प्रोग्नोसिस वहाँ पे अच्छा होगा. यस सो नाउ नेक्स्ट इज ग्रेनुलोसाइटिक सार्कोमा. The alternative name is myeloblastoma or chloroma associated with the M2. The marker is CD45, 43, CD117 and the MPO, and clinical feature is proptosis. Yes, तो एक बच्चे का फोटो देते हैं जिसको दिखाया होता है प्रोप्टोसिस और फिर ये सब चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती है. Now M3 is acute promyelocytic leukemia, and you can say you are reading from the M3 Academy, so obviously prognosis is good. So you can say this in this leukemia M3 acute promyelocytic leukemia prognosis यहाँ पे अच्छा होता है. So this is acute hypergranular promyelocytic leukemia APML इसको बोलते हैं. 1517 इसका ट्रांसलोकेशन है. So M3 Academy is established since 1517, you can remember. Or the odd number 3 is the odd number, so this is also a odd number. Now so road is present, DIC is present, DIC 1 2 3 3 alphabet, so this is present. Or road be 3 alphabet, so this is present. And treatment is अल्ट्रा अल्ट्रास रेटिनोइक एसिड आर्सेनिक, ये सब यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है. सो आर्सेनिक को क्या आप पढ़ सकते हो H3 आर्थेनिक ट्राई ऑक्साइड है. ट्राई मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब 3, तो M3 यहाँ पे पढ़ सकते हैं. यस सो यू कैन इजिली कोरिलेट दिस. नाउ M4 एंड M5 सब टाइप. सो M4 को अपन बोलते हैं नेग्लिस टाइप. M5 इज मोनोसाइटिक. यस now M4, so 4 square is 16, so inversion of the 16 present. Eosinophilia, gingival hyperplasia is present. M5 the highest incidence of the organ infiltration सबसे ज़्यादा होगा. so gingival hyperplasia, organomegaly, lymphadenopathy सब सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलने वाला है. and M5 में सीट सिंड्रोम भी मिलता है. this ASUs look like 5, so this is related to the sweet syndrome. now तो M6 को बोलते हैं इरिथ्रोइड. यस आरबीसी वाले को अपन इरिथ्रोइड बोलेंगे. और इसको बोलेंगे डी गुगलीमोस डिजीज. सो गुगलीमोस में जी लिखते हो, दिस जी लुक लाइक द 6. यस यू कैन रिमेंबर दिस हैज अ पुअर प्रोग्नोसिस. नाउ M7 इज मेगा कैरियोसाइटिक, मींस प्लेटलेट से रिलेटेड है. प्लेटलेट वाला नंबर आ जाएगा 41 46. डाउन सिंड्रोम. यस तो उसका बेड प्रोग्नोसिस होता है, बट डाउन सिंड्रोम के साथ हो तो गुड प्रोग्नोसिस हो जाता होता है. So M7 has a bad prognosis, but with the Down syndrome, it is a good prognosis because one thing is given down, so another thing is good. Yes, so why M7 is associated with the Down syndrome? When you are writing the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 on the down position, so associated with the Down syndrome. Now, तो M7 में क्या बोलोगे? M7 is a least common type. Yes, सबसे नीचे है least common type, last type का है, so associated with the Down syndrome. सबसे डाउन में आपको ने इसको लिखा है और एस को उल्टा कर दो तो एफ आता है. सो फाइब्रोसिस इसमें मिलता है. सो दो चीज़ें इसमें मिलती है, डाउन सिंड्रोम एंड फाइब्रोसिस. डाउन सिंड्रोम एंड फाइब्रोसिस. यस नाउ तो एएमएल के मार्कर क्या है? M4 याद कर लो, एमपीओ होता है. यस एनएससी भी होता है, म्यूरामिनिडेज भी होता है M4 M5 का. यस मोनोसाइट के लिए पास पॉजिटिव भी होता है यहाँ पे M6 एंड M7. यस तो ऑडियो क्लियर है? प्लीज गिव मी द रेस्पॉन्स अबाउट द ऑडियो इन द कमेंट बॉक्स. यस shall we proceed?
यस आगे बढ़े। एम आई ऑडिबल? यस। सो क्या क्या मार्कर आपने देखे यहाँ पे एएमएल के? एएमएल में एम आता है, सो M4 माइलोब्लास्ट के लिए MP हो जाएगा, NAC मिरामिडेज 4-5 पे के लिए हो जाएगा, और पास किसके लिए हो जाएगा? पास S4 7 और S4 6 7 और 6 के लिए हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं। हेरी सेल ल्यूकेमिया, हेयर वाली स्टोरी यहाँ पे अपन देखते हैं। यस, दिस इज हेरी सेल ल्यूकेमिया। हेयर को क्या बोलते हैं? बाल। सो दिस इज बी सेल NHL। yes, and obviously hair is this after becoming the dry, this is trapped, so you can say trapped positivity, but remember here, trap positivity, tartrate resistant acid phosphatase. So acid is important, this is not alkali, this is acid. Yes, तो यू कैन से ड्राई हेयर, ड्राई टेप यहाँ पे हो रही है, बोन मेरो में आपको ड्राई टेप मिल रहा है, हेयर को बाल बोल रहे हो, सो बी सेल NHL हेयर ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको याद करना है कि एसिड है, यहाँ पे याद करना है कि ये अल्कली नहीं है। यस, नाउ so hair can be of the massive length, so massive splenomegaly is present, and hairy cell is present, and many girl are applying hair on the egg on the hair to shining the hair, so fried egg appearance is also present. Now, so next is treatment. Many are applying the clay in hair to shining the hair, so clay means cladribine is the treatment, and obviously male are more affected with the blindness, so this hairy cell leukemia more present on the male than the females. Yes, and lymph node involvement is not there. As the hair is smooth, so there is a no lymph node, so no lymph node. So lymphadenopathy, lymph node involvement, lymph node metastasis is not present. Now, so everybody want A1 quality here. So A1 annexin A1 is present. So where annexin 5 is present? Apoptosis. Apoptosis P means penta. Penta. So apoptosis में क्या आता? P. Apoptosis में क्या आता? P मतलब 5 याद कर लो. And many have dye their hair by the red color. So you can say it involve the red pulp of the spleen. All the other non-Hodgkin lymphoma involve the white pulp of the spleen, but the hairy cell leukemia H for hemate means red. So red pulp को involve करता है. Now 25-year girl very conscious about the hair, so CD25 is positive. Hair cutting cost is CD103. Yes, hair cutting cost is CD103. And every girl want each of the 1 hair is clean, so 11C is positive. CD25 we already see. Yes. Now, so key feature is this is key feature, we already discussed this. Yes. Now we already discussed this point. So this is all about the अपने सारे ल्यूकेमिया लिम्फोमा यहाँ पे देखे, ML CML ALL सब यहाँ पे, ALL यहाँ पे नहीं देखा, बाकी हेरी सेल ल्यूकेमिया भी देखा। द स्टोरी ऑफ द हेरी सेल ल्यूकेमिया भी अपन ने डिस्कस करी। यस, तो थैंक्स फॉर दी पार्टिसिपेशन इन द INI-CET इंजेक्शन। यदि आप इसकी PDF चाहते हैं, इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दिस सेशन, यू हैव टू do it yourself task. You have to take a one page and make a comparison table of the all leukemia which we have discussed. Also write the mnemonics and submit on the M3 Academy Telegram group. We will send you the PDF and also pre-test, post-test and the potential questions test link. Yes, so thanks for the participation. And we have conducted 3 injection session: injection 1, injection 2 and injection 3. So you can as you keep submitting us the flashcard, your handwritten flashcard, we will providing you the link and the PDF of the earlier injection sessions. Yes, so thanks for the participation. And this hematology, this oncology, hemato-oncology is very very important each and every year, either from the medicine, either from the pathology, the question is short.